You take us from the sun, such a knowledge of fire,
संगत से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। कहे कबीर ता जाइए, साधु संग जाओए। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. क्योंकि एक मानव जीवन संगत के ऊपर निर्धारित है। जब से बच्चा पैदा होता है
और मरने दम तक उसे संगत की जरूरत होती है। The human being, right from when he's born, he needs company and carries the impressions of the people around him. कहते हैं कि पहले माँ बाप ही माने उस लड़के के गुरु होते हैं, बच्चों के गुरु होते हैं, जो उनको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, और बाद में वही टीचर और मास्टर के जो है कि समागम में जाके जो विद्या परमात्मा ने हम सबके अंदर रखी है, वो मास्टर धीरे धीरे उस विद्या को जागृत करते जाते हैं। So initially, the uh, the newborn starts learning from its parents. The parents teach how to eat, walk, and uh, teach him everything. And then gradually, as the baby grows, then it goes in the company of teachers in the school and colleges, and then those teachers enlighten that child, and they awaken the intellect, they awaken the knowledge that the child possesses by teaching him in the schools and colleges. कहते हैं बाद में टीचर उनके अंदर जो विद्या का भंडार परमात्मा ने रखा है, फिर वो जागृत करते जाते हैं, और क्लास बाय क्लास वही एक दिन चल के वो लड़का कहते हैं कलेक्टर, जज, बैरिस्टर बनता है। So that way the teachers awaken the knowledge which is contained within, and they give him the teachings, and then class by class he moves forward, and ultimately he becomes like a barrister or a judge, or he gains knowledge and becomes a professional. और बच्चों के अंदर माँ बाप जिस श्रेणी के होते हैं वैसे ही गुण उनके अंदर डालते हैं। अगर माँ बाप के अच्छे स्वभाव हैं, अच्छे गुण हैं, तो वही स्वभाव बच्चों के अंदर भी डालते हैं। उनको किसी का दिल दुखाने के लिए मना करते हैं, प्रेम और प्यार से रहने का सिखाते हैं, तो बच्चों का संस्कार भी ऐसा ही बनते जाता है। एक ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मण का ही संस्कार आता है, और एक कसाई के घर में बच्चा पैदा होता है तो कसाई के ही संस्कार उसके अंदर पैदा होता है। The parents also, the nature of the parents is also impressed upon that child when the child sees and follows the parents. So if the nature of the parents is good, then they will also bring about that that sense, that culture in the child, and they will also tell the child not to hurt others, and they will, if they are good natured, likewise the child will also become good natured. So if a child is born in a Brahmin's house, he will learn the ways of the Brahmins, and if he is born in a butcher's house, he will learn the ways of the butchers. तो कहते हैं इसी तरह से बड़े होकर के भी हम जिस जैसे जैसे समागम में जाते हैं, हमारे मन पे उसका बहुत बड़ा असर होता है। अच्छे लोग भी बुरे संगत में जाके बुरे बन जाते हैं। And as we grow up, we also come in the company of several outsiders, and those outsiders also carry impressions upon us. So even good natured people, when they come in the company of notorious people, then they will also develop, they will also have those impressions upon them. तो इसीलिए कबीर साहब इशारा देते हैं, कह कबीर तह जाइए साधु संग जहाँ हो। कहते हैं आप ऐसी जगह जाओ जहाँ साधु संतों का समागम हो। So Kabir Sahib says that you should go and seek the company where there are sadhus, and you get the company of the sadhus. क्योंकि वो उस मालिक के भक्ति से जुड़े होते हैं, और आपको भी उस मालिक के भक्ति की तरफ जोड़ते हैं, और आपके अंदर उन्हीं का गुण और स्वभाव पैदा होता है। Because when you go in their company, they are connected to God Almighty. They are doing the devotion of God Almighty.
So when you go in their company, you will also be motivated to do the devotion of God Almighty. आप थोड़ा दिन शराबियों की संगत करो, आप भले ना पियो, लेकिन शराब के दुकान में जाके उनके साथ बैठ के बाहर आओ, देखने वाले लोग कहते हैं ये भी कुछ लेता ही होगा. So if you are in the company of drunkards and they go and sit in a restaurant or a wine shop drinking, and you are sitting there, though you're not drinking, but you're giving them company, when you come out, they will, when you come out, people will observe and see that you have also come out of that wine shop or out of that restaurant having had something, some drink. तो इसीलिए कहते हैं कि संगत बहुत बड़ा असर करता है और इंसान को संगत की बड़ी जरूरत होती है. तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि आप साधु संतों के समागम में जाओ और वहाँ आपको फायदा मिलेगा. Therefore, what company we keep is very important, and for a human being, it is very important for him. He will learn from company only. So Kabir Sahib says that be mindful of the company and go in the company of sadhs. संगत कीजे संत की, जिनका पूरा मन, संगत कीजे संत की, जिनका पूरा मन, मन तो ले ही देते हैं नाम सरी खादन. तो वही आप कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि सबसे ऊंची से ऊंची संगत किसकी है, तो कहते हैं संतों का. Kabir Sahib says that, so for the company we keep, what is the highest order of company that we should seek? And he says that that company is the company of saints. अब हमें पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि संत कौन होते हैं. So first we should know who are saints. क्योंकि जिनके अच्छे स्वभाव हैं, घर बार त्याग दिया, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लिया, कहीं जाके मंदिर में भी रहते हैं, उन्हें भी संत ही कहते हैं. Many a times people who have good houses, they may leave those houses, adorn saffron clothes, and may even stay in temples, and people address them as saints also. हाँ, तो कहते हैं कि संत महात्मा कहते हैं, संत हम उनको कहें भाई जिन अपनी सुरत सचखंड पठाई. कहते हैं हम संत उनको कहते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को सतलोक सचखंड पहुंचा दिया है, परमात्मा से मिलके परमात्मा का रूप हो चुका है. So masters say that those are saints who have had their soul reach Sachkhand, and there they have manifested God Almighty, and their soul is connected to God Almighty. हमारे संत मत में ये स्टेज हैं, जैसे नाम लेकर के खाली सत्संग में हाजिरी दे रहे हैं तो हम उनको सरल में सत्संगी कह देते हैं, क्योंकि सत्य का इनका संग हो गया. शब्द से गुरु ने इनको जोड़ा है और वो शब्द ही सत्य है. So in Santmat there are stages, and the first stage in Santmat is when we get initiated and we are attending satsangs. We are called satsangis. Satsangi means one who is connected to the truth. So they are connected by their initiation to the truth. So therefore they are called satsangis. और दूसरा अभ्यासी, जिन्होंने गुरु के हुक्म में रह के उनके बताए हुए रास्ते पे कठिन साधन करके अपने रूह को 9 से 10वीं में पहुंचा दिया, जिसकी तीसरी आंख खुली है, गुरु प्रकट हो गया, तो उसको अभ्यासी कहते हैं. The second stage is Abhyasi. Abhyasi is when one follows the teachings of the master and he withdraws the attention of his soul from the 9 outward doors and comes to the 10th door, and there he manifests the
radiant form of his master within. उनको अभ्यासी कहते हैं। और जिन्होंने और तरक्की किया और मेहनत करके अपनी रूह को पार ब्रह्म पहुंचा लिया, जो मुक्ति का द्वार है, माने मुक्ति का स्थान है, तो उसे साधु कहते हैं। And thereafter, that soul, when it progresses and crosses Parbrahm, then he is called a sadhu. साधु तो उनके वो तीन शरीर के पर्दे से उनकी रूह अलग हो गई होती है और उनके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, वो जीव मुक्त हो गया होता है, उसे साधु कहते हैं। So there in Parbrahm, the all the outward manifestations of the physical, astral, and causal bodies are shed off, and the soul is in a pure form. There, that uh, disciple will be called a sadhu. और जिन्होंने और भी मेहनत किया गुरु के कृपा से, जिसकी रूह सतलोक सचखंड पहुंच गई, वो संत है। And those who further work and go towards God Almighty and manifest God Almighty, they go to Sachkhand, Satlok. They are saints, they are sant. तो इसीलिए कबीर साहब जी संतों की संगत कर रहे हैं। अब कर रहे हैं कि कबीर संगत संत की, जिनका पूरा मन, माने मन बोलते हैं 40 शेर का 40 शेर का हमारे यूपी में मन होता है, तो लेकिन ये मन माने उनके अंदर वो पूरा होते हैं, उनका मन उनके बस में होता है। हाँ, तो कहते अन्न तोले ही देते हैं नाम सरी का धन। तो ऐसे संत महात्मा के पास जब हम जाते हैं, तो वो बगैर कोई आशा के हमें उस नाम रूपी धन को देते हैं। So Kabir Sahib says that you have to go in the company of sons, of saints who have manifested God Almighty and who are there, and they are the people who have got a complete control on their mind. And in UP, they refer that Pura Man is like someone who has the power of 40 lions. So here, there Kabir Sahib is referring to the saint who has a complete control on his mind. So when you go in the company of such a saint, then without any expectation, that saint gives you the wealth of Nam. तो कहते हैं वो नाम जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो अन्न तोले ही, बगैर उसकी कुछ कीमत लिए हुए भी इतना अमूल्य चीज हमें दान देते हैं। So it is a priceless gift of giving Nam, and without any expectation from that disciple, the saints give them that wealth and that priceless gift of Nam. क्योंकि दान तो बहुत है, वस्त्र दान, गोदान, भूदान, स्वर्ण दान और बहुत सारे अन्नदान, बहुत सारे दान हैं, लेकिन ये दान से जो है कि मन भरता नहीं, यानी पूरा नहीं, शांति नहीं आती। आप 1000 एकड़ जमीन दे दो और भी कोई देगा तो ये ना नहीं करेगा। आप 1 किलो सोना दे दो और भी कोई देगा तो ये ना नहीं करेगा, क्योंकि उससे तृप्ति नहीं होती है। लेकिन कहते एक ही है वो अन्नदान, उससे थोड़ा पेट भर जाता है ना, तब अंदर से बोलते हैं बस। So the saints give you that priceless gift of Nam. They donate that priceless gift to the disciple without any expectation. Different types of donations. One can donate wealth, one can donate gold, one can donate land, or there are various things. One can donate food. So that way, with these donations, uh, the mind is not satisfied. So if someone gives you 1,000 acres of land, if he donates to you, and someone else comes to donate further, we are not going to refuse them. We will accept that further donation. Likewise, if someone gives you a kg of gold, but there is another donor, then the mind is willing to accept further gold. But however, there is this donation of food.
where there is a point of satiation, that when someone gives us food and we are full, then from inside only we say no, we don't want more, we have But eaten enough. So uh, so all these are limited uh, donations where the mind is not fully satisfied. तो कहते हैं, लेकिन अन्नदान भी कितना टाइम तक शांति देगा? 2-3 घंटे, और बाद में वो हजम हो गया, फिर खाने की चिंता हो गई। तो कहते हैं खाली एक नामदान है, वो नामदान हमें इस जन्म मरण से मुक्ति कर दिलाता है, भव सागर से पार करता है। So even that donation of food, that also will last only for a few hours. Once that food is digested, again the mind is seeking for more food. So there is no end to these kind of donations, and the mind is never satisfied. The only true satisfaction that one can donate, that is the gift of Nam. वो नाम जो हमें करोड़ों जन्मों के इस दुख से छुटकारा दिलाता है और हमें अपने पिता परमात्मा की गोद में पहुंचाता है। हाँ, कहते हैं कि ऐसा कीमती चीज वो नाम दान देते हैं। So that is so priceless that it stops us from coming back and forth again in this uh, ocean of life and death, and it rids us from the suffering that we have had for uh, so many scores of lives ahead earlier, and it takes us back to God Almighty and places us in the lap of God Almighty. तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे ऊंचा जो मन संतों का होता है कि बगैर कुछ कीमत लिए हुए हमें वो कीमती चीज नाम दान देते हैं। So Kabir Sahib says that the mind of the saints is so complete that they give this donation, this priceless donation of Naam, uh, to the people who come in their company. कबीर संगत साधकी हरे और की व्याधि, कबीर संगत साधकी हरे और की व्याधि, संगत बुरी साधकी आटो पर उपाधि। तो वही आप इशारा देते हैं कि साधु संतों की संगत जो हरे और की व्याधि, जो हमारे ये दुख को दूर करती है और दुखी जीवों को सुख और शांति प्रदान करती है। So he says that that company of the saints that gets us rid of our sufferings, and it gives us pleasure. क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी से हम ग्रसित हैं और वो बीमारी सबके पीछे लगी हुई है। वो कौन सा बीमारी है? वो भव रोग की बीमारी है, माने पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। तो कहते हैं इस बीमारी से हमें मुक्ति दिलाती है। The greatest illness that we are suffering from, that is the illness of coming again and again in this world, the illness of life and death. So saints with their grace get us rid of this illness. तो इसीलिए कहते हैं कि साधु और संतों के समागम में जाओ, क्योंकि वो परमात्मा के भक्ति से जुड़े होते हैं, आपके अंदर वही संस्कार पैदा करते हैं, आपको भी उस मालिक के भक्ति से जोड़ते हैं। Therefore, Kabir Sahib says that you go in the company of sadhus and saints, because in their company you will get motivated to go within, and they will bring about those impressions that are required to go within. महाराज कहानी बताते थे, एक बहुत बड़ा व्यापारी, बिजनेस माने पैसे वाला आदमी, वो लोगों को पहले ब्याज बट्टे का काम करता था। एक तरफ से पैसा बांटते जाता था, दूसरी तरफ से वसूल करते आता था। वो किसानों को ब्याज पे पैसा देता था। Sanji used to often relate this story of this money lender. He would lend money to various
villagers, and he would go on his round of collection. So he would lend monies and he would collect monies, and he would make that tour of several villages. तो एक बार वो अपना वसूली पे निकला हुआ था, एक गांव में आया। वो गांव में एक गरीब किसान, करीब 7-8 साल हो गए थे, वो पैसा भी नहीं दिया, ब्याज भी नहीं दिया था। तो वो प्रामसर नोट इसके पास था। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे जो बड़े बड़े लोग थे, गांव के लोग, उनको बुला के और हिसाब किताब करके वो बेचारे का, क्योंकि उसने ब्याज भी नहीं दिया था 8 साल से, पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि उसको खाने को ही पूरा नहीं होता, लड़की की शादी में लिया था, और वो दे नहीं पाया। So once he had gone on this tour for collection, and he went to this particular borrower. He was a villager, and for nearly 8 years he had not repaid the debt to this money lender. He had not even paid the interest because his earnings was barely enough for him to survive. He had borrowed for his daughter's marriage. So this money lender then called for a gathering of the village elders, and he showed them this account that this villager owed to him. तो वो उस गांव में आके और 4-6 लोग, बड़े बड़े लोगों को बुला के और पंचायत करके और अपने ब्याज बट्टे में उनके सारा सामान उसमें जमा कर लिया, यहाँ तक कि गाय बैल तक भी जमा कर लिया। So there he, with these village elderly, he showed the account, and according to the village panchayat, the ruling was that he will take the assets of that borrower, that villager. So that money lender took all the assets of that borrower, including even his cattle stock that he had. तो बाद में लोगों ने बहुत समझाया, कुछ वहाँ के लोकल लोगों ने, कि वो बहुत गरीब है, उसको खाने को पूरा नहीं होता है, कुछ पैसा ब्याज का छोड़ दो, असल ले लो। लेकिन वो बहुत कंजूस आदमी था, उसने माना नहीं। So the other village elders also pleaded with that money lender to uh, to leave the interest portion and to just take the settle the principal amount. But that money lender was miserly and he did not accept that. तो बाद में गांव वाले नाराज हो गए कि ये इतना कठिन दिल वाला है, एक पैसा भी छोड़ा नहीं उस गरीब से, तो जाने दो, इसको कोई मदद मत करो, छोड़ दे इसको। So the other villagers also got annoyed with this behavior of this money lender, and they felt that he has not even spared that borrower a single naya paisa, and he has taken everything belonging to that villager. So they decided that they should not help this money lender anymore. तो बाद में ये सब पैसा, अपना जो कुछ बचता था, सब जगह लोगों को बेच दिया और उनका सामान बेच दिया, बैल बेच दिया, गाय बेच दिया, और सब पैसा जमा करके और वो लेके चला सूटकेस, और उसका बेड का बंडल था और एक सूटकेस था। So that money lender then auctioned all the assets of that villager, and he sold everything, collected the money, and he packed his bags, his belongings, and the money, and he decided to leave that village. उसको उसी रोड से 3 किलोमीटर आगे गांव में जाना था, किसी ने उसको मदद देने नहीं चाहा, और रोड पे अपना बिस्तर बंद और सूटकेस रख के खड़ा था। So he had to then travel to the next village, which was about 3 kilometers away, and he had this heavy bags with him, his belongings, and he stood there with the belongings on the road so that he could get some help to go to the next village. But all the villagers refused to help him, so he was standing there on the road with his bedding and his bags. तो बाद में कुछ एक आधा घंटे के बाद एक महात्मा उसी रोड से जा रहे थे, तो महात्मा इनको थोड़ा सा चिंतित देख के
पूछते हैं क्यों महाजन क्या बात है, तो चिंतित लगता है। तो कहते हैं हाँ महाराज, आगे गांव में जाना था, हमारा बिस्तर बंद ले जाने वाला कोई नहीं, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ। So after about half an hour or so, as he was standing on the road to go to the next village, one Mahatma was passing by, and that Mahatma saw this man standing in the sun with his bags, and he saw him worried, and he came to inquire what happened, what the problem was. So he asked that money lender as to what the problem is, why is he looking so worried. So the money lender told him that I'm waiting for some help to carry my bedding and bags to the next village. तो महात्मा कहते हैं, महात्मा को दया आ गई। कहते अच्छा भाई, बिस्तर बंद मेरे सिर पे उठा दे और सूटकेस तू ले ले, चलो दोनों आपस में बात करते निकल जाएंगे। So the Mahatma decided to help, and he said, "Okay, you give me the bedding, I will carry it on my head, and you take one bag, and we'll both talk and go to the next village." तो दोनों उन्होंने उठा दिया और उठा के दोनों चलने लगे। तो महात्मा कहते देख भाई महाजन, चुपचाप चलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा के बारे में तू कुछ कह, मैं सुनता हूँ, या तो मैं कहता हूँ तू सुन। So then the Mahajan lifted that bedding and put it on the head of that Mahatma, and they picked up the bags and started walking. So as they started walking, the Mahatma told that money lender that, look, I cannot walk quietly. Either you talk about God and you explain to me and you talk to me about it, or I will talk about God and I will explain that to you. तो महाजन कहता है महाराज, मैंने कोई सत्संग विसंग तो अभी तक सुना नहीं। हाँ, अगर आप कुछ कहो तो मैं हामी भरते जाऊं। So the money lender told him that, look, I have never attended a satsang and I do not really know this subject. So better you talk and I will nod my head. तो बाद में महात्मा ने सत्संग शुरू किया, मानव शरीर की कीमत और एक एक श्वास कितना कीमती है, और परमात्मा के बारे में बताते चले गए। So that way the Mahatma started, and he told this person about the importance of this human life, about the importance of each breath, about God Almighty and the path, and as they were walking. ऐसे 1 घंटे के बाद वो गांव आ गया। तो महाजन कहता है महाराज, इसी गांव में जाना है, मेरा बिस्तर बंद इसी पेड़ के नीचे उतार दो। So after an hour or so, they reached the next village, and then the money lender told the Mahatma that we have reached this village. I want to go in this village only. So you can leave the bedding here below the tree, and I will go inside in the village. तो महात्मा ने बिस्तर बंद एक पेड़ के नीचे उतार दिया, और आप जो है कि सोचा, दिल में सोचा महात्मा कि अगर मैं ऐसे ही चला गया तो 1 घंटा बेचारे के साथ रहा, इसके साथ कुछ अनहोनी होनी है, उसको जागृत करके तो जाऊं। So when the Mahatma offloaded that bedding, he felt that this money lender had given him company for an hour or so. So he felt that I should tell him what is the tell him about his destiny and what he is going to go through. If I don't tell him, then it will be such a waste. So I should tell him. तो महात्मा कहते हैं कि देख महाजन, अब तेरी उम्र खाली 8 दिन की बाकी रह गई है, और तूने बहुत कुछ पैसे ब्याज बट्टी पे दिया है। अब जो कुछ करना है 8 दिन के अंदर कर ले, नहीं तो यमदूत आके पकड़ के ले जाएंगे। So the Mahatma told that money lender that, look, you have only 8 days to live. Your life is going to come to an end at the end of the 8th day, and before that, and only, I mean,
throughout your life you have been doing this work of money lending, so you do whatever it takes to improve your deeds, and before the angels of death come to fetch you. वो घबरा गया और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करने लगा, दया करो, मेरे ऊपर दया करो, ये मुझे मृत्यु से बचा लो, मेरा बहुत कुछ डूब जाएगा। So that money lender then fell to the feet of the Mahatma and pleaded and requested that he should somehow um, postpone that death, that he should ward off the death and those angels of death, and he asked for mercy. तो महात्मा कहते, भाई तू मेरे सिर पे बिस्तर बंद देने से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये होनी थी। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो तू मर जाता तो तेरा सब डूब जाता। तू 1 घंटा हमारे साथ होने के कारण से मुझे दया आई और मैं तुझे पहले ही जागृत कर रहा हूँ, ये होनी है, और 8 दिन के बाद तो यमदूत आके पकड़ के ले जाएंगे, अब जो कुछ करना है तू कर ले। So the Mahatma told him that, look, it is not that I am cursing you or anything, and the fact that I've carried your bedding, it is not because of that. This is destiny. This is your destiny, and I see your destiny. Whether you would have walked with me or otherwise, this was to happen. And since you walked with me, I am giving you the benefit of uh, telling you what I see. And at the end of 8 days, you are definitely your life is going to come to an end. तो पैर छोड़ने को तैयार ही नहीं, कहता है महाराज इससे कुछ बचने का उपाय है तो बताओ, और जोर से पैर पकड़ लिया। So the money lender then held on to the feet of that Mahatma and pleaded, and he said, "You give me some solution." And he did refuse to leave the feet of that Mahatma. तो महात्मा कहते, भाई देखो ये होनी है, यमदूत आएंगे, पकड़ के लेके जाएंगे, धर्मराज के मुंदे खड़ा करेंगे, आप उधर खड़ा करेंगे और उधर आपका हिसाब किताब निकालेंगे। तो उधर से देख के तो तूने तो अपने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, न दान पुण्य, न किसी गरीब की सेवा, तो तूने दूसरों का दिल दुखाया है और इसीलिए वो तुझे ले जाके नरकों में डालेंगे। So when he pleaded, then the Mahatma told him that, look, this is your destiny. It is going to happen, and that cannot change. The angels of death will come and fetch your soul, and they will take your soul to the Lord of Judgment, and there your account of deeds will be seen. And if I look back in your deeds, you have not done any good deed really. You have hurt people, and you have not uh, given any donations. You have not been selfless in your life. You have been very selfish, and your account will be read out by the Lord of Judgment. And when he sees this, he is going to uh, give you the judgment of going into hell and paying for these sins. हाँ, तो कहता नहीं महाराज, कोई भी बचने का उपाय है आपके पास रहता है, आप बताओ। हाँ, तो बाद में महात्मा को दया आ गई बहुत रोने से। उन्होंने कहा, देख भाई, एक ही बचाव का रास्ता है, एक है। तो बोले महाराज बताओ। तो कहते हैं कि वो जब तेरा लेखा निकालेंगे तो तूने सारी जिंदगी पाप ही पाप किया है, खाली 1 घंटे जो सत्संग सुना है, महात्मा के समागम किया है, वही तेरे लेखे में पुण्य फल है। तो वो क्या करेंगे, वो पूछेंगे कि महाजन ये 1 घंटे का पुण्य फल तेरे पल्ले में है, तो 1 घंटे का पुण्य फल का फल चाहिए पहले, या तो तू पाप का ये पहले भोगेगा। तो तू कहना उनसे मुझे 1 घंटे का पुण्य फल दे दो, तो वो जो भी मांगेगा 1 घंटे के लिए उनको देना पड़ता है। तो फिर वो पूछेंगे, अच्छा 1 घंटे का पुण्य फल में तो स्वर्ग बैकुंठ कैलाश कौन सा सुख चाहिए 1 घंटे के लिए? तो तू कहना वो सुख नहीं चाहिए। जिन महात्मा के समागम से मुझे 1 घंटे का सुख माने ये मिला है, ये तो उन्हीं का दर्शन चाहिए मांगना, तो वो हमारे पास भेजेंगे और उसके बाद मैं देख लूंगा।
So that money lender pleaded and asked for a solution. So the Mahatma felt gracious towards that money lender, and he said that okay, when your account of deeds will be opened, they will see that you have all the bad deeds of all of your entire life, but there is one good deed that you have done. You have walked with me for 1 hour. So the Lord of Judgment will see that you have been in the company of a saint for 1 hour. And when he sees that, he will ask you whether you want the benefit of that 1 hour which you have spent with the saint to be given first, or would you like to suffer the sins of your rest of your life first. And when he asks you like this, you tell him that I want the benefit of that uh, good deed I have done of walking with a saint, and they will have to offer you that, and then they will give you a choice of how you want to enjoy or get the benefit of that 1 hour. And they may offer you to be placed in heaven or with Vaikunth in Kailash. Vaikunt or Kailash, and they will give you all. They will ask you how you want to enjoy the benefit of that 1 hour. And when they ask that, you say that you don't want all that. You simply want the darshan of that same saint with whom you had walked. And when you ask that, they will have to grant you that benefit, and they will bring you back to me. And when they bring you back to me, then I will see what has to be done. हाँ, तब महात्मा को थोड़ा महाजन को तसल्ली आई। उन्होंने महात्मा का पैर थोड़ा नमस्कार करके उनको जाने दिया, और फिर वो वहां से घर लौट आया। और डर हो गया उसको कि मैं 8 दिन मरूंगा। वो घर आके और ये रटन करने लगा कि यमदूत 8 दिन में आएंगे, हमको लेके जाएंगे, हमारा लेखा देखा को भूल नहीं जाऊं। यही रटन करते बैठ गया। So that money lender then left the feet of that Mahatma, and he felt that okay, maybe perhaps this is a solution. And thereafter, the Mahatma departed, and the money lender came home. And when he came home, he kept practicing that. Whatever the Mahatma had told him that he will ask for the benefit and then he has to go to him. So he kept repeating that and he kept practicing that. तो कहते इस तरह से याद करते बैठा, और टाइम आ गया, यमदूत पकड़ के लेके गए और धर्मराज के सामने खड़ा किया। जब चित्रगुप्त उसका लेखा निकाले, तो उसमें इसने कोई अच्छे कर्म तो किया नहीं था। खाली 1 घंटा जो साधु समागम किया था, वो सत्संग सुना था, वही पुण्य फल था, और बाकी सब भी पाप है। तो धर्मराज कहते हैं कि क्या तू पहले पाप का फल ले भोगेगा या तो पुण्य का फल चाहिए? तो वो कहता है महाराज पहले 1 घंटा पुण्य का फल दे दो, पाप तो मालूम नहीं कितने हैं। तो कहते हैं अच्छा 1 घंटे के लिए कौन सा सुख चाहिए? स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश, तीनों में 1 घंटे के लिए भेज देगा, जो भी सुख मांग। तो कहता है मुझे ये सब सुख नहीं चाहिए, जो साधु समागम से साथ से हमें 1 घंटे का पुण्य फल मिला है, हमें उन्हीं का दर्शन चाहिए। तो तुरंत धर्मराज, वो तो न्याय करता है, धर्मराज ने 2 यमदूत बुलाया और बोला इसको लेके जाओ, ऐसी जगह आश्रम है, वहां महात्मा रहते हैं मृतलोक में, वहां 1 घंटे के लिए छोड़ के फिर उसको वापस लेके आओ। So, accordingly, that time came, his death came as the Mahatma had foretold, and the angels of death came to take his soul, and they took him to the Lord of Judgment. There, Chitragupta opened his account and saw that there was all sins that he had committed in his life, and that there was this 1 hour of uh, good deeds that he had done. So, accordingly, the Lord of Judgment, as expected, asked him whether he wanted the benefit of that 1 hour of good deeds he had done by staying in the company of the saints, or for the uh, sins that he had committed. So, as practiced, he said that no, I don't know how many sins I have done. God, I don't know how long it will take there. So better
better you give me that 1 hour of good deeds that I have. So the Lord of Judgment asked him whether he would like to go to heaven or Kailash or Vaikunt. He would be allowed to spend 1 hour there as a benefit. That man, as had been explained, he said, I don't want to go to these places. Instead, I would like the fruit uh, of that good deed to be given to me in the form of darshan of that same Mahatma with whom I spent that 1 hour. So the Lord of Judgment agreed, and he summoned two angels of death, and he told them that you take this soul back in this physical world, and let him be in the company of that master for an hour, and then you bring him back. तो यमदूत लेके मृतलोक में वापस आए और आके फिर वो शरीर में आ गया, उसको माने लेके गए और उधर छोड़ दिया, महात्मा के आश्रम में छोड़ दिया। कहता है 1 घंटे बैठ के वापस आ जा, और हम लोग गेट के बाहर खड़े रहते हैं, क्योंकि जहाँ महात्मा रहते हैं गेट के अंदर यमदूत नहीं जा सकते, यमदूत और काल भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए वो लोग गेट के बाहर ही उसको छोड़ दिया, जा 1 घंटा बैठ के दर्शन करके वापस आ जा, और हम इधर ही खड़े रहते हैं। So when the two angels of death took that soul, they brought him back to uh, the ashram of the Mahatma, and at the gate they told him that you go inside because we are not allowed to enter. Wherever there are saints, the angels of death cannot come inside. And not only the angels of death, even the Lord of Judgment and even Kal cannot come inside. So they have to wait out. And like that, the two angels of death told him to go inside and then come out after 1 hour. तो वो गया महात्मा जी के पास, आश्रम में गया, महात्मा ध्यान में बैठे थे, उन्होंने देखा, क्यों भाई आ गया? बोलता हम राजा जी। तो कहता इधर ही बैठ आंख बंद करके, तो उधर ही आंख बंद करके बैठा। अब वो जो सीन देख के आया है नरक, वो सब घूम रहा है उसके अंदर, कि वहाँ कैसे कैसे वहाँ पे हिंसा माने लोगों को तकलीफ दिया जाता है, वो सब चक्कर आ रहा है। और इधर यमदूत थोड़ा 5-5 मिनट में चिल्ला रहे कि भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा। तो वो थोड़ा टाइम में आंख बंद करता है, वो सब याद आता है, तो कहता है महाराज देखो वो लोग बाहर ही खड़े हैं, अभी तक गए नहीं। तो महात्मा कहते तू चिंता मत कर, यहाँ कोई आएगा नहीं, तू आराम से आंख बंद करके बैठ। तो वो बैठता है लेकिन उसका मन स्थिर नहीं। फिर कहता है देखो वो लोग खड़े हैं, अभी तक गए नहीं। तो ऐसा कर करके 1 घंटा तक वो लोग ने इंतजार किया, और 1 घंटे के बाद जब ये बाहर नहीं आए तो अंदर वो लोग जा नहीं सकते थे, और वहां से वापस लौट के चले गए। So when he went inside, the Mahatma was in meditation, and the Mahatma opened his eyes and saw that he has come. He asked him whether he went through all that experiences. So he said yes. Now the Mahatma told him that okay, you sit down and sit for meditation. So when he sat for meditation, all those same thoughts kept coming, all the sight of the hell and all the sufferings there and what he was going to go through, all of that kept coming, and these two angels of death outside were shouting out to him to come out. So this kept on happening, and he was looking at that. Then he told the Mahatma, and the Mahatma told him that no, you continue doing your meditation. So after an hour, those angels of death had to return because they cannot come inside. So they had to go back. बाद में वो लोग वापस गए, धर्मराज को बताया कि महाराज बहुत प्रयत्न किया, 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा तक हम लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए और वो बाहर आया नहीं। तो धर्मराज बोलते जाने दो, अब उसको छोड़ दो, वहां हमारे और तुम्हारे जाने का अधिकार नहीं। तो बाद में उस महात्मा ने उस आत्मा का उद्धार किया। So then the two angels of death went back to the Lord of Judgment, and they told him that we tried to bring him back. We waited there for 1.5 hours, but he did not come out.
So the Lord of Judgment said that, okay, never mind. Now he has gone to that saint, and that saint is going to take care of him. So we are not allowed to go inside. So they stopped calling him out, and that Mahatma then got the salvation to that human. इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी बोलते हैं 3 घंटे को, एक घड़ी आधी में पुनः आधी, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। अगर सच्चे साधु संतों की संगत मिल जाती है तो एक नहीं, आधा का आधा, पौना घंटे में भी अगर साधु संतों का समागम मिल गया तो एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। Tulsi Sahib says that if we have the company of the masters, even for 45 minutes, even then we will get our salvation, not only of this life, but all our previous lives. We will be able to get absolved of all of those sins and the burden of karmas that we carry. तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि साध की संगत हरे और की ब्याद, और दुर्जन संगत बुरी असाध की आठों पहर उपाधि। कहते दुष्टों का समागम आठों पहर हमें दुख मुसीबत और कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका परिणाम के लिए हमको नरकों में भी जाना पड़ता है। So Kabir Sahib says that therefore you should go in the company of the masters, the saints, and if you go in the company of other worldly people, then uh, all such company may even draw you and take you to hell for for redeeming what you do then. कबीर संगत साध की जो विभू सिखाए, कबीर संगत साध की जो विभू सिखाए, फिर खांड भोजन मिले साकट संगन जाए। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु समागम में आप तब तक जाके वहां पड़े रहो जब तक कि तुम्हें गेहूं का आटा नहीं, जौ का आटा नहीं, जौ का भूसा छान के जो औरतें गाय बैल को डाल देती है, वो भूसे की रोटी मिले तब तक वहां पड़े रहो, क्योंकि वहां पे रहने से, उनके दर्शन से, उनके निर्मल पवित्र वाक्य से आपके पाप ही कटते जाएंगे, कर्म ही कटेंगे। So Kabir Sahib says that go in the company of saints and stay in that company, even if you do not get, uh, even if you have to stay on the rotis of the husk, and even if you don't get wheat for rotis, but you get husk for rotis, uh, even then you stay there and stay in their company, because that is where you will truly get your salvation. और दुर्जन दुष्टों के समागम में रोज पूरी मालपुए मिठाई मिले, लाखों का फायदा होवे, तो भी वहां मत जाओ। So, don't go in the company of uh, other people who are swayed by their mind, because there, even if you get all your puris and you get the nicest of sweets and you get uh, lakhs of rupees, even then don't go in that company. क्योंकि वो आशा और वो पैसे की दुराशा आपके चरित्र को काला कर देगी, आपके कुछ ऐसे कर्म करवा देगी जिसका आप नरकों में ना मालूम कितने जन्म सड़ना पड़ेगा। Because that kind of wandering will lead you to sin, and for that you may, one doesn't know how long you will have to go and suffer in hell, and how many lives you will have to spend there for redeeming that, uh, redeeming those desires which you have built in uh, by going in such company. हाँ, हमने भी आश्रम का जीवन बहुत कठिन होता है। आजकल तो थोड़ी सुविधा हो गई है, पहले बहुत कठिनाइयां थी। हम लोग बाबा जी के आश्रम में 111 लोग थे। हाँ, और राशन का चावल आता था बेंगलुरु से। हाँ,
वो किसी मिनिस्टर ने 10 बोरा चावल लिख दिया था, क्योंकि आश्रम में चावल पैदा नहीं होता था, तो वो राशन का चावल 10 क्विंटल आता था और महीने महीने में वो वही खाते थे। और मुद्दा, और जो सांबर बचता था रात को तो फिर वो सवेरे गर्म करके देते थे। माने वो गुरु निंदा नहीं, कहने का मतलब आश्रम जीवन ही ऐसा होता है। और रात को जो मुद्दे बचते थे उसका रोटी बना के देते थे, फेंकते नहीं थे। तो कहते हैं कि वहां रहना इतना कठिन था कि अगर हम स्वाद के पीछे पड़े होते तो हम वहां महीनों भी नहीं टिकते थे। लेकिन हमें बाबा जी की सेवा, बाबा जी की इतनी बड़ी दया में हुई कि हमने खाना और शरीर का सुख कभी नहीं देखा। और हम जब 8 साल थे आश्रम में, एक चटाई के अलावा हमारा कोई संपत्ति नहीं थी, गोनी और चटाई। हमारे पास बेडशीट भी नहीं था। 2 गोनी, एक यहाँ तक डालते थे, एक ऊपर से लेते थे। मच्छर बहुत है, उसी में सोते थे। और चटाई हमारा और जमल भाई का। बिस्तर वहां कोई नहीं देता। बहुत बड़ी परीक्षा थी बाबा जी की, कौन टिकता है उसमें। Staying in the ashram is quite difficult. I have stayed in the ashram, and the stay was quite difficult. Now, of course, in the ashrams there are lots of facilities that are given. There is much more comfort. But the ashram, when we were staying in the ashram, it was very difficult. The there were about 111 people in the ashram, and all sevadars, and the ashram would get rationed rice. Some minister had given a sanction of uh, some 10 rice, क्विंटल 10 quintals, and राइस then regularly that 10 quintals of ration rice would be महीना purchased महीने में आता every month by the ashram. And था। then we would get to eat. Rice was not grown in the ashram, so we would get to eat that rice and ragi, and whatever sambar was left in the evening, that was again reheated, and we would eat that in the माने morning. I'm not trying to criticize the ashram. I'm only trying to say that the life was difficult. It was a test, and the only connection and the only belongings I had in the ashram was one uh, chatai, one just a small thin carpet which on which I would sleep, and for covering we had two gunny bags. So that was the only thing we had, and there were lots of mosquitoes in the ashram, so we had to cover मैंने बात ourselves की तो with these two gunny bags. So myself and Jamal Bhai, both of us were used to stay like this. And other than that, there was no absolutely no belonging. So for 8 years we stayed like this, and this is truly a test, and it is Babaji's test, and the amount of grace that he showered on us is cannot be is without it is fathomless, the kind of grace that he showered on us. But it was a really tough test for all of us. So the stay in ashram is not an easy task. ये थे बेरनार हमारे साथ थे, और क्रिस्टोफर, क्योंकि ये क्रिस्टोफर तो पहले ही आए थे, 2 साल हमारे आगे ही। मैं 74 में गया जनवरी में, ये लोग 71 से उधर थे, लेकिन बेरनार 75 में आए। तो So बेरनार भी हमारे साथ सेवा किए हुए सब लोग। 6 महीना ये लोग को इतना प्रेम था महाराज से, इतना तकलीफ होते हुए भी 6 महीना आश्रम में रहते थे ये लोग। 14 लोग थे पार्टनर्स। ये लोग 6 महीने आश्रम में रहते थे, 6 महीने अमेरिका। 6 महीने आश्रम में, 6 महीने अमेरिका। इनका तो फ्रांस है। तो वहाँ 6 6 महीने आश्रम में रहते थे वो। बाबा जी से इतना प्रेम था। इनके लिए तो थोड़ा ऊपर खाना बनता था। क्योंकि वो बेचारे तीखा वीखा नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग का लंगर कुछ अलग ही था। so even Bernard was there during that time. Bernard was also there, and Christopher, of course, was there even before. In 1971, Christopher came,
I came in 1970. He came in 1971. I came in 1974. And Yes, Bernard, I think, 75. came in 1975. And they also used to, they had also a lot of love and affection for the master, and they used to stay for 6 months in the ashram. So they also went through, saw all the difficulties, and they also stayed there. And of course, their food was cooked in a different kitchen. So because they could not go through that spicy food that was made in the ashram, नहीं, so उनको that भी was a सादा ही different बना matter. था, वो दूसरे लंगर से बन गया था। तो अभी क्या है, उधर गटर की सफाई होती थी, गंदा पानी आता था बेंगलुरु का खेती में, तो वो नाला 4 किलोमीटर साफ करना पड़ता हर महीने में, नहीं तो घास बढ़ जाता था, मट्टी गिर जाती थी, पानी बंद होता था। कैनल कैनल की सफाई इनको मालूम है। इतना सवेरे लोग जाते थे, इतना गंदा पानी, गटर का पानी, एसिड विसिड कंपनी का पानी, इतना अंदर जाते ही चमड़ा सफेद हो जाता था पैर का, एसिड का पानी, और इतना हाथ और इतना पैर तुरंत सफेद हो जाता था वो पानी में अंदर जाते ही। और हम लोग शाम तक काम करते थे, वो कचरा, दुर्गंधी, बहुत दुर्गंधी, वो कचरा मट्टी सब निकालना। किसी कोई गांव वाले लोग छोटे छोटे बच्चे मर जाते वो भी उसी में फेंक देते थे। हाँ, अब उनको भी साइड में गड्ढा खोद के हम लोग ही गाड़ना कैनल में, क्या करेंगे अभी, नहीं तो पानी नहीं जाएगा आश्रम का। हर महीने 10 दिन सफाई होती थी उसकी। There was there was a canal. There was a canal. It was wastewater that would come डर्टी from the वाटर, Bangalore बेंगलुरु city, वाटर। and that canal would get water in the fields, and that canal would carry all the filth from the Bangalore city, and a lot of chemicals were there in that. In fact, there were villagers would also dump small newly born babies also in that. So there were dead bodies also in that. Now we had to clean that canal because immediately that if with that water grass would grow inside, and once grass would grow, then the side of that canal would also cave in, and we that water would stop for the ashram. So every month we had to 10 engage in दिन। the cleaning of that cleaning of that canal. And it was so acidic, that water, that even as soon as we stepped in, the feet would become white. So the hands and the legs would become completely white when we would do the cleaning, and we would be there in that water from the morning till night. Every month we had to do this exercise of cleaning that canal. अब वहाँ 2 मटका पानी लाते थे, कितना दूर, 3-3, 4-4 किलोमीटर, तो हम लोग उसी में धोने का पैर, कीचड़ धो के, और ये लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालते थे हाथ पे, साबुन वाबुन नहीं, और वो खाने के समय उसका दुर्गंध आता था, हाथ गंदा है ना, लेकिन खाली थोड़ा साफ पानी से धोते थे। लेकिन देखो गुरु की कृपा, वो सब ख्याल भी नहीं आता था, ऐसे ही खाना खाते थे। उस समय वहां पे खाना आता था 2 टाइम का, उधर ऐसे ही खाना खाते थे लोग, और फिर उस काले में जाके काम करते थे शाम तक। और सफेद होता था लेकिन कोई भी बीमार नहीं होता था, इतना मच्छर रहते थे कि कोई हद नहीं। लेकिन कोई भी, हम देखा सत्संगी लोग को कोई बीमारी आया हो या कुछ हुआ हो, नहीं, ये तो बाबा जी की दया थी। So we used to spend the whole day there, and that was about 4 to 5 kilometers away from the ashram. So they would bring food for us, so that for the sevadars in that canal, and they would be able to get only about one or two pots of water, because it was a long distance and they had to carry that water. So they would just uh, pour a little bit of water to clean our hands, and there were no soaps and all, so we would just clean our hands with that little bit of water. And that stench of this place, and whatever was there on our body with legs and hands, that stench would not go for days. So that would be there, and like that only we would then eat the prasad that we would get in that place. So it was a difficult time, and but it is Babaji's grace that not a single person ever fell sick, despite being in that very dirty water throughout the day, and with scores of mosquitoes biting us.
Not a single person I remember ever had fallen sick at that place. So it was really the grace of Somnath Babaji there. हाँ हाँ। तो वही कहते थे। और एक करीब 12-13 एकड़ फॉरेस्ट था अपने अंदर में, आश्रम का था। तो उसमें लोग गांव वाले चोरी से लकड़ी काटने के लिए आते थे, चोरी चोरी से। तो बाबा जी ने क्या किया, ये लोग को किसी को डरते ही नहीं थे गांव वाले। तो बाबा जी ने क्या किया, क्रिस्टोफर और पाल को ड्यूटी लगा। ये साथ थे, इनके उम्र में बहुत बड़े, अभी तो कम हो गए हैं, बड़े लंबे थे, 7 फीट के थे। और गम बूट दिया था इनको, क्यों कांटा बहुत था। तो दोनों गम बूट पहन के भागते थे, धप 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 आवाज आते थे। और ये लंबे लंबे थे, इनको देख के गांव वाले लकड़ी वकड़ी छोड़ के भाग जाते। फिर वो लकड़ी उठा के लेके आते लगे। So there was about 14 acres of forest land in the ashram also. And the nearby villagers would come and they would cut wood and steal the wood from that forest. Now the locals there, they were not able to stop those villagers, and those villagers would not listen to the locals. So Babaji had given that duty to Christopher and Paul, and both of them were given gumboots. And then in those days, Christopher was even taller than what he is today. So he was huge, and Paul, and both of them would then guard. And whenever those villagers would come to cut wood, they would run, and the sound of their gumboots in that forest running, ये that would लोग scare the लंबे villagers. लंबे देख के ही डर जाते थे। Those villagers would run away seeing these huge people coming towards them, and they would leave their wood and run away. And then these people would bring that wood into the kitchen for the ashram. तो मैं क्या करता, नाइट ड्यूटी करके इनको 3 बजे उठाता था, ये लोग पार्टनर्स को। ये लोग चाय बनाते थे अपने कमरे में ही, तो हमको भी चाय देते थे। 3 बजे इनके साथ चाय पी के फिर भजन बैठते थे। So I had night duty, and I used to walk the periphery of the ashram. And at 3 o'clock, I would come and wake them up, the foreigners, and they would make tea in their room. And then they would also give me tea. And after that, then I would sit for meditation. हाँ, अच्छा, वही ले लो। कबीर संगत साधकी जो की सिखाए। कबीर संगत साधकी जो की भूसी खाए। खीर खांड भोजन मिले साकट संगन जाए। राधा, अब वही वाणी कर लेंगे आगे। अरे 3 ही हुआ। राधा। Only 3 stanzas are done. The rest will be taken tomorrow.